महात्मा गांधी के शतकोत्तर स्वर्ण जयंती के साल में वयोवृद्ध रचनात्मक कार्यकर्ता विचित्र नारायण जी को ये पुरस्कार देते हुए हमें बहुत हर्ष होता है। मैं इसे दुग्ध शर्करा योग मानता हूँ। विचित्र नारायण जी शर्मा के बारे में हमारे दिल में एक खास आदर है। ये लाल बहादुर शास्त्री और आचार्य कृपलानी के सहयोगी रहे, इतना ही नहीं तो आचार्य कृपलानी जी के साथ गांधी आश्रम की नींव रखने में उनका बहुत योगदान था। रामकृष्ण बजाज और मैं, हम दोनों का आदर आचार्य कृपलानी जी के लिए खास इसलिए था कि हमारे बचपन में वर्धा में जो हम क्लब या समाज घनचक्कर समाज चलाते थे, उसके लोग अपने आप को सदस्य मानते थे। कृपलानी जी कहा करते थे कि जग में सबसे बड़ा घनचक्कर महात्मा गांधी है। घन यानी ठोस, विधायक विचार करने वाला, चक्कर यानी भ्रमण करने वाला, आंदोलन करने वाला। उस बिरादरी के विचित्र नारायण जी रहे। नाम जैसा है वैसे ही हमेशा विचित्र नारायण की कथा रही। सादगी और मितव्ययिता विचित्र भाई के संपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही। गांधी आश्रम के अथक प्रयासों का जीवंत स्मारक बन चुका है। गांधी आश्रम में ही उन्हें अपने कार्य के लिए प्रेरणा और बल मिलता रहा है और आश्रम से वे अपने सादगी भरी जीवन के लिए आवश्यक नाम मात्र का भत्ता लेते रहे हैं। शिष्टता की सजीव मूर्ति विचित्र भाई के चेहरे पर करुणा, ममता भरी मुस्कान सदैव रहती। उन्होंने पूर्णतः स्वावलंबी और संतोषमय जीवन जिया है। वे कर्मयोगी हैं। बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह अनुशासित, स्थितप्रज्ञ, सहयोगी और कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेही, सत्य और तटस्थ अभिव्यक्ति के पक्षधर तथा गांधीवादी मूल्यों की जीवंत प्रतिमा है। वे मानते हैं कि हमारी स्वाधीनता की रक्षा और बहुमुखी उन्नति गांधीवादी मूल्यों के माध्यम से ही संभव है। श्री विचित्र नारायण शर्मा को इस पुरस्कार के लिए चुनकर फाउंडेशन के न्यासी अत्यंत हर्षित अनुभव कर रहे हैं। यह पुरस्कार रचनात्मक आंदोलन में विचित्र भाई के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने का प्रयास तो है ही, बल्कि श्रेष्ठ संतोषमय जीवन में के अनंत स्रोत के रूप गांधीवादी मूल्यों को उनके द्वारा जो प्रचार मिलता है उसका भी सम्मान है। मैं मेरी ओर से, सारे ट्रस्टीज की ओर से और आप सबकी ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि विचित्र भाई को लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इसके बाद भी उनको अवसर मिले और उनके मार्गदर्शन का हमें अवसर मिले। इस प्रशस्ति पत्र के साथ ये पुरस्कार विचित्र नारायण शर्मा की ओर से उनके प्रतिनिधि स्वीकृत करेंगे। In Mahatma Gandhi's scheme of things, non-violence was a positive and dynamic force. It has a definite science behind it. It could be generated, developed, made irresistible. It expressed itself in the shape of active love, service and cooperation. It not only refrained from being a party to exploitation and injustice, but felt an urge to resist all exploitation and injustice, and yet set about it a systematic and practical way to oppose it. Mahatma's gospel of active love, service and cooperation was endeared to his heart, and he practiced it with all sincerity and devotion. If we recall the pre-independence era, we would know that it was at the behest of Mahatma Gandhi that Lord Mountbatten was made the first Governor General of independent India. He did not take this decision out of compassion for the Britishers, but because of his deep-seated ideas and belief that oppression and hatred cannot be mitigated by oppression or hatred. But out of sincere love and cooperation only, we could change the heart of the oppressor. By taking independence through non-violent means, he impressed upon the world that the power of gentleness and love is greater than the power of might and oppression. In the battle of non-violence, no party loses, rather both the parties gain wide acclaim and recognition. On 15th August 1947,
we parted as friends, and Gandhi demonstrated this feeling of love and friendship by offering the highest toast of this country to the erstwhile rulers of the country. Can we find such an example elsewhere in the history of the world? Gandhi's unfallible love for the downtrodden, Daridra Narayan, is well known. He was against laziness, idleness and hypocrisy in any form. He says, I quote, "My ahimsa would not tolerate the idea of giving a free meal to a healthy person who has not worked for it in some honest way, and if I had the power, I would stop every Sadabrat where free meals are given. It has degraded the nation, it has encouraged laziness, idleness, hypocrisy and even crime." It was a matter of great pain to Gandhiji to have witnessed emaciated and naked skeletons roaming about in shape of living human beings. He could not stand it. He discarded his clothes in favor of a lion cloth because millions of small children had nothing to put on and millions of mothers and sisters did not have enough to cover their body frame. He put the spinning wheel in our hands because it could feed them and clothe them immediately. To him, hand spinning meant freedom from starvation and nakedness for self or one's own kith and kin. But some people are under the impression that hand spinning has no place in the present atmosphere and background of this mechanical age. They may be asked, if hand spinning does not have the atmosphere or the background in this age of high tech and machinery, will starvation, nakedness, want and suffering fit in this background? If the compulsion of the atmosphere leaves no room for human initiative, all arguments must cease and men should look on helplessly. No one should deny that some employment, no matter how inadequate, is better than no employment. Gandhiji once said that the Khadi organization was the cheapest in the world engaged in commercial operation. He set a limit of 20% to be charged for all operations, right from the purchase of raw material down to the supply of finished goods to the consumers. This includes all establishment expenses, salaries, rents, postage, banking and freight charges, etc. The Khadi institutions have scrupulously maintained this high standard all along. Thus, Khadi is not a mere plea for mercy. It is the birthright of the people to have work and wages. I put it very mildly that civilized society has at least to vouchsafe to a law-abiding citizen what it does to a lawbreaker. In a democratic setup, the people are the real masters and the government is there to serve them. Is it not an irony of fate that the masters should not get even fraction of what the servants claim for themselves as a right and enjoys it? I would like to take this opportunity to thank all of you for the honor bestowed on me.